नाजरीन, कश्मीर लाइफ की सीरीज साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। आज के इस शुमारे में हम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से, जो कनाडा में है। इन्होंने पीएचडी तो यहाँ ही किया मुल्क में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी तक 3-4 पोस्ट डॉक्स किए हैं डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। हम इनसे बात करेंगे। बासित साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में। थैंक यू सो मच मसूद साहब। माइक्रोबायोलॉजी का साइंस है, ये क्या है और इसमें जो लोग तहकीक कर रहे हैं वो किस चीज की तहकीक कर रहे हैं, इसकी रेलेवेंस कितनी है ह्यूमन लाइफ में? Thank you for the question. So actually microbiology is a very broad field. Atmosphere is different microbes study kara. But for me, I'm particularly, my research is focused on bacteria. Otherwise, atmosphere viruses, atmosphere pathogens, तो मगर मेन यस रिसर्च particularly focus on bacterial pathogenesis, या बैक्टीरिया क्या रोल सैनिस एनवायरमेंट्स में सान ह्यूमन लाइफ खतर, तो बे एम ते डिजीजेस गसान ह्यूमन लाइफ में तुहद रोल क्या बेनिफिट क्या तो नुकसान क्या एम सत, तो बहुत सह स्टडी करा। यम कि बड़ पेंडेमिक्स वुनिक हिस्ट्री में वो सब वायरसेस का क्या करना था। वाइडली बीइंग बिलीव्ड that bacteria is something that has been completely vanquished. मतलब अब बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वायरस क्योंकि इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा खतरा है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई बैक्टीरिया से हम पूरी तरह बच गए हैं? नॉट एट ऑल। यह बिल्कुल गलत अफवाह ते बेशी गलत इंफॉर्मेशन एज वेल, चूंकि बैक्टीरिया डिजीज करा एक्सटर्नली अगर तुम वो स्किन इन्फेक्शन गसान, तो तम सोता बर्डन पेवान सान इकोनमी पे, या स्किन इन्फेक्शन कत्या ज्यादा गसान, तथ खतर मोस्टली बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल। तम अलावा वो इंटरनली अगर तुम वो यम इंटरनली डिजीज कंडीशन तुम बैक्टीरिया सत गसान। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया डिजीज उस बैक्टीरिया सत गसान, तम ब्लड इन्फेक्शन गसान, तम डेथ गसित, या सेप्टिक शॉक सेप्टिक शॉक तो बैक्टीरिया सत गसान, तुम टॉक्सिन्स रिलीज करान यम सह बॉडी हुन यम ते इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट तुम इमीडिएट डेथ गसित तुम सह। या यु सर्जरी कर सर्जरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन इजीली गसित, तम सह तुम स्ट्रक्चर बनाना ये बायोफिल्म वन। बायोफिल्म बनान बैक्टीरिया तुम रेजिस्टेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया खिलाफ यूज कर, तुम कर एंटीबायोटिक्स तुम बैक्टीरियल बायोफिल्म खिलाफ कह, तम सह ड्रग अवेलेबल करंटली कहें यम तुम ट्रीट कर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इससे मिथ कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन करा कहें या उहद रोल डिजीज या health wise कहें। Perhaps I couldn't articulate myself better. My point was that unlike viruses, these bacteria are not being seen as a creature that can create a pandemic. For instance, I'll tell you, in Kashmir, cholera for more than 200 years was being seen as a resident killer. Yeah, right. But once we managed treating cholera, we don't have cholera the way it used to be. Yeah, in some part it's true. Like bacteria, there are various antibiotics has been discovered, जो bacteria infection को effectively treat करते हैं. But unfortunately, most of the bacteria have developed now antibiotic resistance mechanism. तो यम तीन antibiotic available छ, तुम दो को दो गसा ineffective against those bacteria. Right. So maybe in future we can see some, may Allah protect everyone of us, but in future we can see that bacteria can cause some pandemic and we don't have the antibiotics available against those because they have developed the drug resistance. So that is now the challenge in the bacterial pathogenesis. For example, from bacteria itself we are developing those anti-microbial drugs. For example, peptides use करना, यम बैक्टीरिया पे एक्सट्रैक्ट करना, पत हेको तुम इस डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजन खिलाफ यूज करें। फॉर नाउ वायरस रिसेंटली दिस कोविड पैंडेमिक हैपेंड, or before that you have seen many pandemics, but it's not like it's happening every year. Pandemic is not happening every year. It occurs once in a century or twice in a century. Similarly with bacteria, it had happened once or twice in a century. So we cannot say like viruses are more or bacteria are more. It depends. And also these bacteria and viruses, they change, they make new variants, they have the mutation and create the new variants which we don't know for in the future what will happen.
So maybe in future it can or it cannot. So we never know. हमको थोड़ा बता दीजिएगा कि आपका जो सफर रहा कश्मीर से, जम्मू कश्मीर Yes. से, फिर आप कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा आपने, कहाँ कहाँ रिसर्च नहीं की, तो जी. थोड़ा सा हमको बता दीजिए सफर कैसा रहा, जर्नी, और उसमें चैलेंजेस भी रहे होंगे. एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हंदवारा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से. और बिल्कुल. मैं एक गांव से हूँ, विलेज एक है कोहरू जो हंदवारा के नज़दीक है. तो वहाँ मैं मेरी स्कूलिंग हुई है, और फिर मेरी 11th ग्रेड एंड 12th ग्रेड भी वहाँ से हुई है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा से. उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है वो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से रहा है. एंड आफ्टर दैट आई मूव्ड, बिकॉज आपको पता है कश्मीर में बहुत सारा कंपटीशन है. सो आई कुडंट गेट एडमिशन इन कश्मीर, सो आई मूव्ड टू बैंगलोर फॉर माई मास्टर्स. तो बैंगलोर में मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी किया था इन 2005-2007 की. तो मेरा नेट क्वालिफाई होके मेरा एडमिशन हुआ फिर सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ. फिर ये एक सीएसआर लैब है जो भावनगर गुजरात में है. And my research was on soil metagenomics. So actually I was working on bacteria which are present in the soil, because जो भी soil में है उसमें millions and billions of bacteria होते हैं, और उनको स्टडी करने के लिए हमको उनको ग्रो करना होता है लैब में. अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ जो बैक्टीरिया है उनके लिए हमारे पास जो उनका जो गुज़ा होता है बैक्टीरिया का, वो हमको नहीं पता है वो किस गुज़ा पे रहते हैं. 90% ऑफ बैक्टीरिया का हमको नहीं पता है वो किस फूड पे रहते हैं, उनको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो वो इसलिए हम उसको उनको कल्चर नहीं कर सकते लैब कंडीशंस में. इसलिए हम मेरा जो स्टडी था वो बेस्ड ऑन डीएनए था. तो मैं डायरेक्टली ऑल जो कल्चरेबल बैक्टीरिया है और जो अनकल्चरेबल बैक्टीरिया है उन सब बैक्टीरिया का मैं एक साथ डीएनए निकालता था. तो फिर उनको स्टडी करता था उनकी फंक्शन क्या है उस सॉइल में, एग्रीकल्चर सॉइल में, जिससे वो ग्रोथ प्रमोट करे हमारे डिफरेंट क्रॉप्स के, तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो सेफ रहे. तो वो उनके लिए डिपेंड करता है बैक्टीरिया कौन से प्रेजेंट है. अगर बैक्टीरियल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो सकती है. तो इसलिए हम कौन से बैक्टीरिया उस एग्रीकल्चर सॉइल में प्रेजेंट हैं, और कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे जो सैलाइन सॉइल बहुत सारी हैं गुजरात में, क्योंकि उनका जो कोस्ट है जो समंदर का कोस्ट है वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो पूरा बैरन है, वहाँ पे कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है. और अगर हम उनमें हम वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे वो कुछ प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, जो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करेगा, और मे बी वो हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए इन फ्यूचर, नॉट ऑफ नाउ. So I was studying those bacteria and their role in environment and their role in agriculture, and how we can improve the microbial composition in different soils to improve their productivity. What was that main takeaway from your PhD? मैंने जो प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल कंपोजिशन स्टडी करने के लिए. और ये नई टेक्निक थी, मेटाजेनोमिक्स एट दैट टाइम वाज अ न्यू टेक्निक. हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग है, मींस जो न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग है वो उस टाइम उतनी डेवलप नहीं थी. वो मैंने एक प्लेटफॉर्म उसके लिए डेवलप किया. तो फिर स्लोली एंड स्टडीली पीपल विल डू मोर रिसर्च एंड देन दे विल बिल्ड अप सम good practical applicability of that research. But for that I found out that there were carbon dioxide fixing bacteria in the barren soil जहाँ पे कोई क्रॉप प्रोडक्टिविटी नहीं है. तो हम वो भी हम फिर सर्च कर सकते थे कि मींस वी आर लुकिंग अहेड कि हम उस सॉइल को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो हम वो भी उसको यूज कर सकते थे कि हम इसको कैसे इस सॉइल को यूज कर सकते हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, कि जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, और जो ये बैक्टीरिया है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगर हम उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे सॉइल में तो मे बी वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड सिंक एक्ट कर सकते हैं. बट इट इज जस्ट ए थियोरी, इट्स जस्ट ए हाइपोथेसिस which I developed from my research. So, but people are working on it, and maybe in few decades we'll see some credential report on it. So, as of now, it was just a basic research. So, I provide a platform how we can study different microbes in barren and agricultural soil, and what is their applicability in barren soil and agricultural soil.
Then you moved for a series of postdocs. What were they all Yeah. about? Yeah, so initially I in 2014 after completing my PhD मेरे को join South Africa as a postdoc. So साउथ अफ्रीका में केप टाउन के नज़दीक एक यूनिवर्सिटी है, इस स्टेलनबोश यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे मैं जो स्किन माइक्रोब्स हैं, स्किन माइक्रोब्स जो हैं वो हमको पैथोजेनेसिस करते हैं कुछ, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक पैथोजन है, अगर वो हमारे स्किन पे कॉलोनाइज करता है, वो हमारी नोज से आ सकता है, तो हमारे स्किन पे अगर उसकी कॉलोनाइजेशन हो जाए उससे हमको इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी बाहर एनवायरनमेंट से आ सकता है, किसी दूसरे इंसान से आ सकता है, या हॉस्पिटल सेटिंग से आ सकता है। तो मैंने वहाँ पे काम ये किया, तो मैंने सॉइल से 2 बैक्टीरिया लिए थे, बैसिलस क्लाउसी एंड बैसिलस अमाइलोलिकोफेसेट्स, ये 2 बैक्टीरिया हैं। तो उनसे मैंने पेप्टाइड्स जो हैं, एक स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया। तो फिर उन पेप्टाइड्स को इन विट्रो कंडीशंस में चेक किया कि वो कैसे जो ये बैक्टीरियल पैथोजन है लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस और सैल्मोनेला एंटेरिका, सीडोमोनास एरोजेनस, डिफरेंट पैथोजेंस मैंने लिए। तो फिर देखा वो जो पेप्टाइड्स हैं वो उन पे एक्ट करते हैं कि नहीं, वो उनके अगेंस्ट काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि जो स्टेफ ऑरियस हैं ये मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इनकी जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप हुई है, तो एंटीबायोटिक्स अब काम नहीं कर पाते हैं हर एक स्टेफ ऑरियस के लिए। तो इसलिए आई वाज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव थेरेप्यूटिक्स, सो पेप्टाइड, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सट्रैक्टिंग पेप्टाइड्स एंड देन चेकिंग इट्स एफिकेसी. So after that, when I found those peptides were effective against those Staph aureus pathogens, drug-resistant pathogens, then I was trying to study how I can introduce these peptides into the in vivo system. क्योंकि पेप्टाइड्स अगर हम डायरेक्टली डालेंगे तो उसके लिए वो पेप्टाइड्स जो है अंदर वो स्टमक में हमारा एसिडिक कंडीशन होता है, वो डिग्रेड हो जाएंगे पेप्टाइड्स, वो अपनी फंक्शनलिटी उनकी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं उन पेप्टाइड्स को मॉडिफाई किया बाय पेप्टाइड केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री यूज करते हैं ताकि पेप्टाइड्स के अराउंड हम एक वेसिकल बनाएं ताकि वो स्टेबल रहे हमारे स्टमक के अंदर। तो वो एक्चुअली हमने कोशिश की उसको करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, एंड इन द साइड वर्क आई वाज वर्किंग ऑन कॉपर मेटल्स। सो कॉपर मेटल्स जो हैं, एक थिन कॉपर मेटल्स मैंने लिए डिफरेंट थिकनेस के। तो फिर मैंने उनका इफेक्टिवनेस देखा कि वो उनके खिलाफ जो कॉपर है वो जो पैथोजेंस के खिलाफ क्या एक्शन है। तो I found out, that was very interesting result. I found out that the copper plates, if I put the pathogenic bacteria, drug-resistant pathogenic bacteria on the copper plates, I found out 6 pathogens were killed within less than 1 hour. So applicability of that research is that we can put those copper metals on the bedding of the in hospitals or the hospital settings, because जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं हम टच करते हैं सरफेसेस को, तो अब हम टच करेंगे सरफेस को, अगर हमारे हाथ पे कुछ बैक्टीरिया है वो सरफेस पे हम टच करेंगे, जो कॉपर मेटल है वो उनको किल करेगा वहां पे विद इन 1 hour. So it was the applicability of that research, but it was just the initial study, and people are working further on it to see how we can implement it in the different hospital settings. So this was my 1-year journey, a postdoc in South Africa. Then I wrote a research proposal, a research grant for my next postdoc, because I was trying to go to some deeper studies, and that's why I wrote a research proposal which was accepted by a reputed Japanese Society for the Promotion of Science. It's one of the very high quality funding agency in Japan. So they provided me 2-year fellowship in collaboration with Kyushu University. It's in the Fukuoka, Japan. So after that I moved to Japan, and I worked there for 2 years, and my research was now the bacteria inside our gut. हमारे gut के अंदर millions and billions of bacteria है, तो हम उन बैक्टीरिया को कैसे यूज, और उसमें कुछ पैथोजेंस हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस हैं, जो हमारे सीवियर डायरिया कर देते हैं और इंसानों की डेथ भी हो जाती है उनसे। तो हम उन पैथोजेंस को कैसे कंट्रोल करें गट में,
تو اس کے لیے میں ان کا مالیکولر میکانزم اسٹڈی کرتا تھا کہ وہ کیسے ٹاکسنز پروڈیوس کرتے ہیں ایٹ دا ڈی این اے اینڈ آر این اے لیول. ٹاکسنز جو ہیں جو ڈیزیز کنڈیشن کرتے ہیں وہ کیسے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے لیے میں ان کا ڈی این اے نکالتا تھا, آر این اے نکالتا تھا, اور میں پھر ان کو اسٹڈی کرتا تھا کہ کون سے ٹاکسنز وہاں پروڈیوس ہوتے ہیں اور ان کو کیسے, اس کو بولتے ہیں کورم سینسنگ. کورم سینسنگ از ایکچولی اے کراس ٹاک بٹوین بیکٹیریا اینڈ ادر بیکٹیریا. سو کراس ٹاک مطلب یہ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے بیکٹیریا. تو جب بیکٹیریا کنسنٹریشن انکریز ہوتی ہے وہ سگنل دیتے ہیں دوسرے بیکٹیریا کو کہ اس کا کنسنٹریشن بڑھ گیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اپنا جو پاپولیشن ہے ان کا وہ اس کا ڈسفنکشن ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیزیز کنڈیشن ہو جاتی ہے. اور وہ ٹاکسن جتنا زیادہ بیکٹیریل کنسنٹریشن انکریز ہو جاتا ہے وہ سگنل دیتے ہیں بیکٹیریا کو کہ آپ ٹاکسن زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کریں. تو پھر اس ٹاکسن جو ہیں وہ پھر بہت ڈائریا کنڈیشن کرتے ہیں یا سیویئر کچھ اسٹامک ایک یا ادر ڈیزیز کنڈیشن کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ پیپٹائڈس, وہ ہم پروبایوٹک بیکٹیریا سے, ہم پروبایوٹک بیکٹیریا وہ ہوتے ہیں جو ہم یوگرٹ میں ہوتا ہے بیکٹیریا, وہ ہم کھاتے ہیں ڈفرینٹ فوڈس کے ساتھ. تو وہ پرو بیکٹیریا میں کچھ پیپٹائڈس ہوتے ہیں جو ان بیکٹیریا کو کنٹرول کر دیتے ہیں. تو لیکن ہم نے وہ اسٹڈی کیا کہ ایک بیکٹیریا جو ہے کلاسٹریڈیم بیوٹیریکم, وہ کچھ پیپٹائڈس پروڈیوس کرتا ہے جو اس پیتھوجن بیکٹیریا کو کنٹرول کرتا ہے. تو ہم نے وہ پیپٹائڈس اس سے ایکسٹریکٹ کر کے پھر ان کو یوز کیا ان پیتھوجنس کے اگینسٹ انڈر ان ویٹرو کنڈیشن, تاکہ ہم ان کی جو پیتھوجنسی ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پھر آر این اے سیکوینسنگ, جو نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ہے وہ یوز کر کے وہ اسٹڈی کیا کہ کون سا میکینزم وہاں پہ انوالو ہوتا ہے. So we were successful in that. And then you moved to Canada. After that, I moved to Canada and I got my postdoc at Canadian Blood Services. So this is now a different research. So I told you I have done different research at different places. So here in Canada, I worked at Canadian Blood Services. Canadian Blood Services is a national organization in Canada. It is involved in distributing and making sure that all the patients in Canada, they get different blood components like red blood cells, plasma or platelets. یا ایون کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہاں کینیڈین بلڈ سروس میں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم جو ریسرچ یہاں پہ تھا, میرا ریسرچ تھا وہ پلیٹلیٹس پہ تھا. پلیٹلیٹس آپ نے سنا ہوگا کووڈ کے دوران جو پلیٹلیٹس, بہت سارے کووڈ پیشنٹس کو پلیٹلیٹس ایز اے تھراپیوٹک انٹرونشن یوز کرتے تھے. تو لیکن انفارچونیٹلی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ روم ٹیمپریچر کنڈیشن میں ہے, اور جو روم ٹیمپریچر کنڈیشن ہوتی ہے وہ بیکٹیریا کے لیے بہت ہی آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے گرو کرنے کے لیے. تو اور پلیٹلیٹس ہم کیسے نکالتے ہیں, تو اس کے لیے ہم وینیو پنکچر کرتے ہیں یہاں اسکن میں. اور آپ کو پتا ہی ہوگا, یا میں آپ کو آپ کے جو آڈینس ہے ان کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے اسکن پہ بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں. ایز اے مینشن ارلیئر کہ جو پیتھوجن بیکٹیریا ہمارے نوسٹرل میں ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں یا کسی دوسرے سے آ سکتے ہیں. تو ڈیورنگ وینیوپنکچر, ڈیورنگ کلیکشن آف بلڈ اور پلیٹلیٹس ڈائریکٹلی فرام دا بلڈ, جو بھی بیکٹیریا ہے اسکن سے وہ انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں پلیٹلیٹس میں. اور بہت سارے رپورٹس آئی ہیں یو ایس میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں اینڈ ایون کینیڈا میں. ایٹ کینیڈین بلڈ سروسز وی ہیو رپورٹڈ 2 such cases کہ جب بھی پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کیے گئے پیشنٹس میں, امیونو پیشنٹس میں جب بھی پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کیے گئے تو ان کو امیڈیٹلی سیپٹک شاک لگ گئے. سیپٹک شاک میں جو پلیٹلیٹس میں بیکٹیریا ہونا ہی نہیں چاہیے. Unfortunately, some bacteria got introduced into the platelets during venipuncture, and when although the Canadian Blood Service, all the blood agencies around the world, they are not all in the, especially in the developed countries, not in the developing nations. In developed countries, they make sure that platelets are free from bacteria. So they are being checked that it should not be contaminated with bacteria. Then only they are transfused to the patients. Unfortunately, there are some bacteria like Staphylococcus aureus. It has the ability to escape the screening system. So جب ہم نے اسکرین کیا پلیٹلیٹس کو تو ہم کو دکھایا اس نے کہ یہ فری آف بیکٹیریا ہے. But bacteria was there because the bacteria hides itself. As I mentioned earlier as well, it forms the biofilm which does not allow it to show in the screening system. So because of that, جو ٹرانسفیوز کیا گیا 2 patients recently in 2017 and 2019 at Canada, we found that 2 patients which were transfused with the platelets got septic shock.
Fortunately, there was immediate intervention and they survived. But we have to make sure that all the platelet units, so they should be free of bacteria. So for that, I was studying the mechanism behind how this bacteria escapes the bacterial screening system. So for that, I used the CRISPR-Cas based mutation studies, as well as I used RNA sequencing using high throughput sequencing technology to study the mechanism of that. And I was able to find out what actually is responsible for the hiding of this bacteria in the platelets. And inshallah, in future, we'll be able to protect all the transfusions from any bacterial contamination. Study has implication across the world, and all the even developing nations, they will be able to take notes from this, and they will able to protect the patients from being transfused with the contaminated platelets. Has there been a technology evolved to manage that? Instrumentation की जरूरत होगी? अभी तक जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको बैक अलर्ट कल्चर सिस्टम बोलते हैं. तो वो बैक अलर्ट कल्चर सिस्टम, it makes sure that all the bacteria present in the platelets are recognized. But as I mentioned, some bacteria, they evolve. So when they evolve, they hide themselves and they does not let the back alert system to detect the bacteria. So, but unfortunately, our developing nations, they don't have such systems. It's only mostly in the developed nations they use. I think so. If I'm not sure, but I think in most of the developing nations, they don't screen the platelets. They just take the platelets and transfuse it without looking into bacterial contamination or other, even virus. We also make sure no viruses, no bacteria, no pathogen is inside the platelets. Then only we, Canadian Blood Services transports it to the hospitals to be transfused to the patient. Then I moved to my next position, which is I'm working as a research associate at University of Ottawa. It's in Ontario, Canada. So here I'm working on a different field, and so my current research is on the gut bacteria and probiotics. So we are making, so my study is how the gut bacteria, they produce some neurotransmitters like enzymes like GABA, and how that GABA is influencing the brain. So we are studying the gut and brain axis, how the bacteria produce those neurotransmitters and they affect, or what is its implication on the brain depression. As you know, the mental health is now deteriorating across the world, especially due to COVID and due to economic conditions across the country and war and everything. The mental health has severely impacted everyone. So now that's why our research here in University of Ottawa is focused on how gut bacteria can we use its population to impact state of the brain, so that it can have positive impact on the mental health of the human beings. So for that, it's my recent study, and I have just started before 2 months. So currently I am working on some bacteria which are producing the neurotransmitters, and now I will use them in the cell lines, human cell lines, and see what's their impact on the human cell lines. Then I will introduce these bacteria into the mice to see its impact on mice. So once we establish that it is positively impacting the behavior of especially the mental health behavior of the mice, then we will use it as a probiotic or as a drug, bacterial drug, therapeutic intervention towards the mental health and improving the mental health of the patients which are suffering from the mental health across the world. So how long will you be staying there? So actually my passion is, I'm so much passionate about research. So my career is now, I'm looking forward to my career based in research. So I'm looking forward to work as a scientist or as an assistant professor in near future. So maybe here in Canada or anywhere in world, it's not, I'm flexible about it. So it depends on my research interest. My research is based on microbiology and it's my interest. So I will work on it, and if I get good position anywhere in world, so I will go there. It is amazing actually. PhD के बाद you are continuously in research, 3 postdocs. ये भी मान लीजिए पोस्टडॉक से बड़ी बात है जो आज काम कर रहे हैं. तो उम्मीद है कि आपकी जो
کہانی آپ نے بتائی، اپنی تحقیق کی، اپنی کھوج کی اور اپنے چیلنجز کی. It must be very helpful. It would be inshallah very helpful to the youngsters who wish to choose academia and science as their career. تو باسط صاحب ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. Thank you so much, Masood sir.